पे गए हो आप में से कोई? अभी कितना बड़ा और विशाल मंदिर है ना वहाँ पे। बट इनिशियल डेज ड्यूरिंग द फाउंडेशन टाइम की मैं आपको स्टोरी बताती हूँ. दिस स्टोरी टेल्स अस नेचर ऑफ श्रीला प्रभुपाद. तो हुआ क्या ड्यूरिंग दैट टाइम, श्रीला प्रभुपाद एक्चुअली ही वांटेड दिस प्रोजेक्ट टू मूव ऑन वेरी फास्ट. तो वो हर दिन मीटिंग लेते थे. एवरी डे ही यूज्ड टू कंडक्ट मीटिंग. So this was time in 1976. Okay, तभी he had called meeting of all the GPC members, various sannyasis, and apart from that devotees, and apart from that the people who were involved into that project, all were invited, and there was a meeting. तो ये meeting जब चल रहा था तो सफाई करने वाली जो बाई रहती है ना, उसका टाइम हो गया था सफाई करने का. So she saw and she just peeped. Abhi, this is my time to clean the particular area. So that time Srila Prabhupada was busy in the meeting. He was discussing about various matters with the architectures, with the contractors, with the Matajis, with the Prabhujis. Very serious discussion was going on. So this lady, she stood there. Just see the nature of Prabhupada. Prabhupada के बारे में आपको पता चलेगा. This lady, she stood there because उसको 1 रुपया मिलता था साफ करने का, और वो 1 रुपये से वो घर का खर्चा चलाती थी, बच्चों को खाना खिलाती थी. तो वो सोच के वहीं पे खड़ी रही क्योंकि मीटिंग चल रहा था. She could not interrupt. फिर क्या हुआ, श्रीला प्रभुपाद का उसके ऊपर ध्यान चला गया. And you know what श्रीला प्रभुपाद said? हर एक लोगों का, everyone has an area of authority. What is the area of authority for children? कहाँ पे आप अपना अथॉरिटी जमा सकते हो? अपने घर पे, अपने प्लेग्राउंड में, राइट? सो अभी यहाँ पे एरिया ऑफ अथॉरिटी बिलोंग्स टू whom as per Srila Prabhupada? The one who had come to clean the place. So Prabhupada said we have to immediately leave this place, and we have to leave this place for that lady. She can come and clean this area. So Prabhupada is so humble. He taught us that each and every person in the society is so very important. Could you understand the past tense? So we should also inculcate the qualities of Srila Prabhupada, who taught us pranadapi sunichena. He never demanded any respect, but he always respected each and every person in the society. So Srila Prabhupada ki jai.